The fifth point is best possible use of scarce resources. So every business should endeavor to make best possible uses of scarce resources. The main motive of the businessman is they use their limited resources and uh, uh, do the more manufacturing work, uh, manufacturing work and minimize the wastage of a मटेरियल. कम रिसोर्सेज से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और वेस्टेज ऑफ मटेरियल को कम निकालना. दैट इज़ अ मेन मोटिव ऑफ एनी शुड बी मेन मोटिव शुड बी ऑफ ऑल businessmen. So second is the human objective. So human resources are most important resources. So production process consists of not only material, machine and land, but the most important factor is organizing a large number of workers to keep material and machine in the motion. So I already taught you man, machine and land. Things are very important to establish any business, but the most important thing of the company is the employee, because with the help of employee we the large number of workers to help to keep to help to produce goods and services for customers. So it is therefore necessary to extend human behavior and treatment organizer and workers. In short, the following may be included in human objective of business. There are some points is very important for human objective is, क्योंकि ह्यूमन जब तक वर्कर्स होंगे तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकती है, बिकॉज आखिर हम मशीन एंड मटेरियल्स को भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयज़ का होना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ जॉब टू लेबर. जैसे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक जॉब सिक्योरिटी देना एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट the important point is the employer should secure to provide a secure job to their labor or worker. To improve working condition and work environment, the employer always should to ready to create a good environment while working, and they always ready to good working condition for the employee. If they provide good working environment and working condition, it is helpful to uh, good manufacturing of the production, as well as workers always happy to do to work for the company. Then third is to provide proper education and training facilities to the worker. The if they hire to the employees, so employers have a responsibility to give a they provide to training for the training to the employees, because if they take training for a particular job, definitely it will helpful to start their job in good manner, and they are able to do work in less time and without any wastage and in less wastage. Fourth is to introduce workers participation in management. If any management is always ready to take ideas and always ready to participate the decision of the company. If employer do uh, take decisions of the employees, it is definitely too helpful to taking more profit, because employees is always ready to give good advice to the employer. Then second is next is to make proper arrangement for welfare of the employees. It is a very important for any organization, because if they if the employers is the responsibility to giving a welfare opportunity to the uh, to their employees,
like they provide free accommodation, they provide free education to their children, and they provide their free water services. These all is a part of they also provide free hospital services. These all is a part of their welfare services to help economical backward people and handicapped person. And businessman is always ready to help backward people means जो बहुत ही जिन्हें कुछ लोग जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो बहुत ज़्यादा गाँव में जो लोग रहते हैं या जो बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, पिछड़े पिछड़े लोग जो होते हैं, उनकी हेल्प करना। और जो भी हैंडीकैप्ड है, जो भी हैंडीकैप मीन्स जो भी लंगड़े हैं, लूले हैं, या जो अपने शरीर से लाचार है, उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। देन थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट इज टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन डिज़ायर क्वांटिटी। द क्या बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को लेके। तो फर्स्ट है कि टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन डिज़ायर क्वांटिटी। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, वो टाइमली अवेलेबल होना चाहिए कस्टमर्स को, ताकि वो जो भी उनकी डिमांड्स है वो डिमांड्स को वो ईज़िली फुलफ़िल कर सकें अकॉर्डिंग टू टाइम इन और उसकी जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए ईच एंड एवरी कस्टमर्स को अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू नीड्स। देन सेकेंड इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। इफ़ a production is ready to distribution, the next point is how to supply to the production to their customers. So a business concern can establish reputation and goodwill only when it meets the needs of the society by supplying goods and services of standard qualities. So how to maintain the fame of the company, कैसे अपनी कंपनी की फेम कस्टमर के सामने अच्छी बनाएंगे। तो जब वो सोसाइटी को जो भी उनकी नीड्स हैं, उस नीड्स को अकॉर्डिंग टू टाइम वो प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को, और एज वेल एज जो उसकी क्वालिटी है दैट इज़ ऑलवेज शुड बी अ स्टैंडर्डाइज्ड। तो गुड क्वालिटी के साथ साथ अपने प्रोड्यूस गुड्स हैं उन्हें कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें पहुंचाना और उनको सेटिस्फाइड करना। देन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द बिजनेस कैन हेल्प द सोसाइटी बाय क्रिएटिंग मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। इफ इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी बिजनेसमैन और एनी एंटरप्रेन्योर, इफ दे स्टार्ट देयर कंपनी, they should provide more and more job opportunities to the youngster. If they provide job opportunities to the youngsters or employees, definitely it is helpful to earn good money, and they also maintain their living standard. And I think without employers cannot do any work. So they if they want to expand their business, so definitely they hire more and more employees and expand job opportunity for youngsters as well as experienced employees. Fourth is avoidance of slum and pollution. Slum is जो भी झोपड़पट्टी जो है उस झोपड़पट्टी एरिया को हटाना, अवॉइड करना, कम करना, और पॉल्यूशन को कम करना। बिकॉज वी नो ऑल दैट अबाउट वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, वी ऑल नो दैट with the due to the emission of industries, the air and water polluted, and this pollution is very hazardous of every person, as well as it is very dangerous for environment, because these emits are very harmful for environment, and they start their these toxic gases is very harmful for environment, because they start green gases production, that is very harmful gases for the environment.
एंड स्लम एरियाज़, जो भी झोपड़पट्टी एरियाज़ हैं, वो झोपड़पट्टी को एरियाज़ को ना देख के जो भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक अच्छी एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, अच्छे घर प्रोवाइड करना, ताकि जो स्लम एरियाज़ हैं हम उसको हटा सकें और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो ईजी हो सके, एज वेल एज़ वो एक अच्छे क्लीन एरिया में रह सकें. देन फिफ्थ इज़ जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. General welfare of the society, then point is general welfare of the society. It means they provide a welfare of the society, like they should provide donation of the schools, colleges and training centers and research center, and they always also provide a free facility, free clinic facility to their employee in hospital. If they provide these welfare in the society, definitely it is helpful to make a good society in our country, and it is very helpful for especially for poor people, because if any poor children is going to school in free education, definitely it is helpful to make a bright future of a poor children.